Let's start speed, time, and distance. Now, the basic formula you guys must have understood in the past, that is distance is equal to speed into time. That is what the formula everybody is aware about. Now, from the same formula, we can derive numbers of formulas. For example, if I say that distance is equal to speed multiplied by time, then I can also say that speed is equal to distance upon time, and time is equal to distance upon speed. Now this gives me another relation, that distance is directly proportional to speed and time, and speed is inversely proportional to time, and also time is inversely proportional to speed. Now what does this mean actually? We'll explain it through examples. For right now, these three formulas that you should be aware about, the basic ones, and these derivations will help in solving some questions with a short trick. Now let's see the first example we have. Before the first example, we also have some conversions, like how to convert the units into smaller units or the bigger units. For example, 1 hour they say equal to 60 minutes and 1 minute equal to 60 seconds. That means 16 to 60, 3600 seconds. That is equal to 1 hour. 1 kilometer is equal to 1000 meters. Everybody is aware about. Now, if I talk about 1 kilometer per hour, now that is equal to 5 by 18 meter per second. We don't need to ratify it. हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. We don't need to cram it. एग्जाम में कई बार मीटर्स पर मिनट भी आता है. So you guys should aware how to take care of that also. So how will you take care of that? For example, you say, you know, that is 1 kilometer per hour. If I have to convert it to seconds, I'll say 1000 meters divide by 3600 seconds. So these zeros will get cancelled. On the table of 2, I can cut it up. That means 1 kilometer is equal per hour equal to 5 by 18 meter per second. Now the same way I can say, अगर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, 1 kilometer per hour, that is equal to 1000 meter divide by 60 minutes. That means on the table of 2, I can say that is 50 by 3 meters per minute. So agar question mein, in the question if you get meters per second, then you can use the above one, and if you use meters per minute, then you can use the meters per minute, this formula also. Reverse is always true. That means 1 meter per second, that is equal to 18 by 5 kilometer per hour, or 1 meter per minute, that is equal to 3 by 50 kilometer per hour. These relations can also be used. I hope this is clear till here. Now we're going to start the questions. Are we clear till here? Now example number 3, which example number 1 which you have, that says
A cyclist covers a distance of 900 meters in 4 minutes and 30 seconds. What is the speed of cycle in kilometer per hour? Now, kilometer per hour में निकालना है, there are several ways to do it. But सबसे better क्या है? That we take (900 meters). Now they ask the speed. The formula of speed is distance upon time. Now distance I have 900 meters and time I have 4 minutes and 30 seconds. Now 4 minutes, that means I need to multiply it by 60 to convert that to seconds. So I'll get total 240 plus 30, 270 seconds. That means here I'll get 270. 0 gets cancelled, 9 into 3 and 9 into 10. I get the answer is 10 by 3 meter per second. In your questions now, when you get the MCQ, the possibility है कि you get options 10 by 3. But the question they have asked in kilometer per hour. So what you will do, you will multiply it by, now 10 by 3 को multiply किससे करेंगे? 5 by 18 से, 18 by 5 से. 1 kilometer per hour, that was equal to, we did, is 5 by 18, but 1 meter per second, that is 18 by 5. So we will convert it by multiplying 18 by 5, 5 into 2, 10, 3 into 6, 18. I'll get my answer as 12 kilometer per hour. This will be my answer. Quite simple, I believe. You can expect this kind of question in a very simple version of entrance exam. जो बहुत basic entrance exam होगा उसमें इस तरह question definitely you can get. Is this clear? Is the first example clear to us? Great. Now the next relationship which we have, speed directly proportional to distance and when time is constant. This I was talking about. Now what exactly this means? Let me just explain that to you also. And distance is directly proportional to time when speed is constant. Time is inversely proportional to speed. This all things I told you already. मैंने already आपको बता दिया है इसको. We're gonna explain that. मैं आपको ये shortcuts नहीं करवाने वाला. I'm gonna do with a simple logic. Every question will solve with a simple logic, and you guys will really find it quite easy. कोई formulas याद करना मैं आपको नहीं कह रहा हूँ. I'm not asking you to cram any formulas. It's maths. The concepts are clear. You don't need shortcuts. आप logical thinking रखकर can find out your answers. Now let's see this. 100 kilometers in 3 hours. When it seems and when it returns, it covers the same distance in 5 hours. That means 100 kilometers in 5 hours. Now find the ratio of speed in both the directions. Now I know the distance that is same, and I need to understand the speed. So if I say time 1 is to time 2, the ratio is given to me 3 hours is to 5 hours. And I already explained to you that speed is inversely proportional to time. That means if speed increases, time decreases. And if speed decreases, time increases. For example, you go from Karnal to Delhi. Let's say the distance is 120 km per hour. And if you go at a speed of 40 km per hour, you're going to take 3 hours. And if you come back at the speed of
60 kilometer per hour, it's going to take 2 hours. That means the speed which we are talking about, if that is in the ratio of 40 is to 60, that is 2 is to 3, the time we are saying it is becoming 3 is to 2. What I did, I took distance as 120, Karnal to Delhi, and Delhi से करनाल वापस. तो स्पीड 140 3 आवर्स लगता है, स्पीड 260 2 आवर्स लगता है. नाउ इफ आई सी इनवर्स का फायदा ये हुआ, मुझे अगर पता है इनवर्स रिलेशन है, मैं कोई कैलकुलेशन ही नहीं करूंगा. मेरा जो स्पीड का आंसर होगा, दैट मींस स्पीड 1 is to speed 2, the answer straight away 5 is to 3. That is my answer. I don't need to calculate anything in this particular question. Is this question clear? Because इतनी सी छोटी सी कहानी है, ये तो एग्जांपल समझाया, I did example of करनाल to दिल्ली वाला, but कहानी इतनी ही है. This is the only story in this question. T1 3, T2 5. Answer is S1 is to S2 going to be reverse, inverse, 5 is to 3. Clear? Let's go for the next question. It says two cyclists. Now, if I start doing this question, example number 3 I'm talking about. Two cyclists. Now they start moving towards each other. Let's say cyclist 1 and cyclist 2. They started to move towards each other. It says they started from their house at the same time. So speed एक की है 10 किलोमीटर पर आवर, and the second one is coming at 11 kilometer per hour. Now find the meeting point. The distance between them is 28. तो अगर ये बीच का distance है 28 kilometers, this distance is 28 kilometers, and they both are moving towards each other. The question was the meeting point. Find out the meeting point कि they gonna meet at what place. This place जो है, what is the value it from point C1 or point C2, whatever you want to take it, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है. Now it's quite simple. जो स्पीड का रेशियो है, that is 10 is to 11. This means क्योंकि स्पीड डायरेक्शन डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, स्पीड कम तो डिस्टेंस कम, तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी 10 is to 11 होगा. Quite simple it is. Why? Because speed is directly proportional to distance. स्पीड ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो स्पीड ज्यादा. दैट मीन्स अगर पूछता है कि C1 से कितनी दूर है, द रेशियो का चैप्टर वी रिमेंबर 10/21, 10 जो स्पीड 1 है, डिवाइड बाय 10 + 11, दैट इज 21, मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, that is 28. Now 7 into 3, 7 into 4. That means C1 से ये डिस्टेंस 40/3 किलोमीटर होगा, और C2 से ये डिस्टेंस 44/3 किलोमीटर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 10 की जगह 11 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. आई बिलीव दिस इज क्वाइट सिंपल, क्वाइट क्लियर टू एवरीबडी. अगर मुझे मालूम है स्पीड 1 एंड स्पीड 2 का रेशियो 10 is to 11 है, तो डिस्टेंस 1 एंड डिस्टेंस 2 का जो रिलेशन होगा, रेशियो होगा, वो भी 10 is to 11 होने वाला है. तो सिंपली 10/21 मल्टीप्लाइड बाय 28, आई विल गेट माय आंसर. तो दैट मींस अगर मुझे इतना मालूम है स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, मेरी इतनी सी कैलकुलेशन से मेरा आंसर आ जाने वाला है. एंड दीज आर द आंसर्स. चाहे वो C1 से पूछे, चाहे C2 से एग्जामिनर मुझसे क्वेश्चन करता है, आई कैन आंसर इट.
Is this also clear? Anav, please put your query ahead. What is not clear, please write it down, or you may speak. Okay. What exactly it said? The first thing they told us कि जो C1 है और C2 दो cyclists हैं, they are moving towards each other. C1 का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, C2 का स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर. I have to find out when they gonna meet. जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या है, that what I have to find out. Now I know speed is directly proportional to distance. That means जो रेशियो स्पीड का होने वाला है 10:11, the same ratio will be for distance also. That is 10:11. Now रेशियो के टॉपिक में वी हैव डन, अगर मुझे किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है देन 10, आप एक और तरीके से भी करते हो जब छोटे थे, दैट इज 10x प्लस 11x. आप इसको इस तरह भी कर सकते हो अगर आपको सीधा ये वाला तरीका समझ नहीं आया. दैट इज 10 बाय प्लस दोनों को किया 21 ऑफ टोटल डिस्टेंस. तो आप ये भी कह सकते हो 10 और 11 का रेशियो डिस्टेंस को कवर करेगा. तो 10x प्लस 11x दैट इज इक्वल टू 28. दैट मीन्स 21x इक्वल टू 28. दैट मीन्स x इक्वल टू 28 7 की टेबल पे जाएगा, दैट इज 4/3. तो जो डिस्टेंस है 10x और डिस्टेंस है 11x. नाउ दैट डिस्टेंस will be 10 into 11 10 into 4/3. So I can multiply this and I can get the answer 40/3. And if I say 11x, then I get 11 into 4 44/3. तो चाहे आप ऐसे कर लो क्वेश्चन को or you do it this way, you'll get the answer. If it is clear, then please write in the chat. Okay, you can choose any of the ways to do it. दोनों में से कोई भी वे चूज कर सकते हो. We are absolutely okay with that. आंसर आना चाहिए बस. You should get the answer. The next example number 4. It says Siddharth arrives at the office late. Now this kind of question are very important in your exams. Siddharth arrives at the office late every day by half an hour. On a particular day, he reduced his speed by 20% and hence arrived 45 minutes late. Normally, he late by half an hour. But now, because he reduced the speed by 20%, he arrived 45 minutes late. If he has to arrive on time, by what percent should he increase the speed? स्पीड को किस पे इंक्रीज करना चाहिए कि वो टाइम पर पहुंचे, अभी लेट है. नाउ सिंपल वे टू डू इट, आई विल से लेट्स गो टू द अदर शीट स्लाइड. एग्जांपल नंबर 4. द क्वेश्चन सेज सिद्धार्थ जो था वो हाफ एन आवर लेट आता है. लेट्स से दिस इज द होम and this is the office. He goes at a certain speed. He reaches here half an hour late. Let's say the speed he walks, that is s kilometer per hour, and he takes t time. Let's say t is the time he is taking, that is t hours. Now on a certain day he reduced the speed by 20%. That the speed became 0.8s. 20% of s, रिड्यूस किया हमने.
तो 0.2s कम हो गया, that I subtracted from here. I got 0.8s. Now he is late by 15 minutes, मतलब t plus 1 by 4 hours. एक्स्ट्रा टाइम, पहले लेट था 30 मिनट्स और अब लेट हो रहा है 45 मिनट्स. 45 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स एक्स्ट्रा. 15 मिनट्स मतलब कितने घंटे एक्स्ट्रा? दैट इज 1 by 4 hours एक्स्ट्रा. दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम. Now understand one thing, I have the distance का formula, that is speed into time. The basic formula I have, I'll use this. Now इस स्पीड से जाऊं यहां पे टाइम लगता है, इस स्पीड से जाऊं इतना टाइम लगता है. जाना तो सेम जगह है, हाउस से ऑफिस. दैट मीन्स s into t, that should be equal to 0.8 s into t plus 1 by 4. Because this multiplication is also distance and this multiplication is also same distance, so I can put them equal. S into t, that is equal to 0.8 into t plus 1 by 4. Let's cancel out s. Now if I solve it, t is equal to 0.8 t plus 8 by 10 into 1 by 4, 4, 2, 1, 5. That means 0.2t is equal to 1 by 5. That means t will be equal to 1 by 5 into 2 into 10. That means time is equal to 1 hour. That means this value we have equal to 1 hour. Is this clear till here? यहां तक क्लियर है हम सबको? Are we clear till here? Anshul, please raise your question. No, I'm not going to do this, guys. Repeat this one नहीं होगा. आपको जहां समझ नहीं आता, you have the option to hand raise. बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट है इससे. पहले अनम ने कराया, मैंने कहा चलो कोई ना. Raise your hand immediately. I did not understand this. Why are you waiting for end the question, beta? Please, everybody, raise your hand immediately. Otherwise, एक टॉपिक को हम एक दिन में खत्म नहीं कर पाएंगे. It's a very lengthy topic and very important also. I'm going to repeat it again. Please raise your hand immediately, guys. Please, you have the option to raise your hand. Sorry. Now the question says there was a guy by the name of Siddharth who used to go to from home to the office. Now he is going with the s kilometer per hour ka speed and he is taking t hours. That is we're assuming. Now the question says he reduced the speed by 20%. तो हमने s का 20% निकाला. So that came out to be 20 by 100 of s. So that is very simple. I can find out 0.2s. So that was the reduction in the speed. It was the reduction. So we removed 0.2s from s. We got 0.8s ka speed. But now it took 45 minutes extra instead of 30 minutes. तो पहले 30 मिनट्स लेट था, अब 45 मिनट्स लेट है, मतलब 15 मिनट और लेट है. तो 15 by 60, 1 by 4 hour लेट है. This is actual time he is taking now, t plus 1 by 4. We know the distance is equal to speed into time. So this speed into time, this speed into time, they are actually the same. So we took it st, s into t, that is equal to 0.8s into t plus 1 by 4. s से s cancel किया.
t इज इक्वल टू 0.8 आगे मल्टीप्लाई किया 0.8 t प्लस 0.8 इंटू 1/4 दैट इज 8/10 इंटू 1/4 4 into 1 4 4 into 2 8 2 1 2 5 so we got 0.82 ti we took at the left hand side we got 0.2 t that is equal to 1/5 then we just put took 0.2 on the right hand side and we solved it we got t is equal to 1 hour. Great, very good. Now the question has not been finished. The question is by what percent should he increase the speed कि वो time पे पहुंचे. Now this 1 hour he is taking and is half an hour late. That means actual time जो है उसको लगना चाहिए 30 minutes 1/2 hour. अब आप सोचो, just think about it. If you are reaching a place in double time, मतलब half an hour आपको लगना चाहिए but you are taking 1 hour, तो आपको स्पीड क्या करना चाहिए ताकि आप टाइम पे पहुंचो. इफ आई अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है आपका, दैट t1 is to t2 if I say that is 1 is to 1/2, तो जो मेरा स्पीड का रेशियो होगा वो उल्टा होना चाहिए. दैट मीन्स 1/2 is to 1, मतलब स्पीड मुझे डबल कर देनी चाहिए. तो द आंसर इज टू रीच इन टाइम आई नीड टू डबल माई स्पीड and I'll reach in time. किस टाइम में? I'll reach in actual half an hour which I need. Is this point clear? Is this question clear? You guys can easily say no, please understand that. But just raise your hand at the same point of time so I can stop myself and I can explain that. It will save time of others. We should value our time. Okay, everybody understood. Great. Now let's go for the next question. Example number 5. Example number 5 says, traveling at 5/6 of the original speed, Manish reaches his office from home late by 5 minutes. Find the original time taken to reach office. Now let's understand that once again. The question says, Manish जो है he travels at 5/6 of the original speed. तो बड़ा सिंपल सा काम है. लेट्स से होम, वही चीज अज्यूम करते हैं जो पहले किया था, बेसिक पकड़ के चलते हैं. होम से ऑफिस जाना है, लेट्स से वो s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है. he goes by s किलोमीटर पर आवर and he reaches there in t hours. पहुंच जाता है. But one day he is going by 5/6 of का speed. तो 5/s किलोमीटर पर आवर जा रहा है. And now this time he is going with t plus 5 minutes late. 5 minutes मतलब 5/60 मतलब 1/12 टाइम लग रहा है उसको. Same concept. This was the question only we had. सिर्फ क्वेश्चन को समझने का तरीका है. 5/6 of original speed, reaches his office 5 minutes late. Find the original time taken to reach office from home. तो पहले क्वेश्चन जो था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. जस्ट पुट देम इक्वल टू बिकॉज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. दैट आई एम अवेयर अबाउट. So I can multiply these two and I can put them equal. That means s into t, that is equal to 5/6 of s
into t plus 1/12. s से s कैंसिल हो जाएगा. Bring this 5/6 at this side, you'll get 6/5t. Cross multiply कर रहा हूं. That is equal to t plus 1/12. Now this will be t को इस साइड ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, you'll get 1/5. t is equal to 1/12. That means t is equal to 5/12. ये आर्ट्स में आपका आंसर आ गया. And that is what the question they have asked. That find the original time taken. Now original time taken we already got. That is 5/12 hours. अगर मिनट में आंसर पूछा है, this is the answer. और अगर मिनट में पूछा हुआ है तो just multiplied by 60. 12 into 5, 60. We'll get the answer as 25 minutes. Any calculation you guys can do, कुछ भी आप लोग कर सकते हो. तो both are the right answers. दोनों आंसर्स ठीक है. तो हम बड़े एक सिंपल फॉर्मूलाज के साथ आगे चल रहे हैं. दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. कोई शॉर्टकट नहीं, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, सिंपल कैलकुलेशन एंड वी गेट द आंसर. इज दिस क्लियर टिल हियर? Look at this carefully. If any doubt anybody has, please raise your hand or ask in the chat. Ask the particular thing which you guys would like to ask. I need more than 50% people to say yes. Great. Very nice. बहुत बढ़िया. Somebody in chat, sir 6 कैसे आया? Which 6? Anisha, which 6 बेटा? I've given you the whiteboard access. You guys, you like my pen is moving there. You can also show me which 6. You can also move your pen on this. हाँ करो, कौन सा 6 कह रहे हो? अप्लाई, हाँ लाओ, कौन से वाला 6 है दिखाओ मुझे. ओके ये वाला, दिस वन. नाउ ये जो 6/5 मेरे पास यहां पर था ना, वी जस्ट डिड अ क्रॉस मल्टीप्लाई. हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इस साइड ले आए लाइक वी डू. तो ये 6/5 हो गया. ठीक है, ओके. You may write in the chat so I can understand that, so I can move ahead. Okay, great. Now let's look at the next question. After example number 5, we have example number 6. It says if trains A and B are traveling at a speed of 100 km per hour and 150 km per hour, what is the ratio of time taken by them to cover the same distance? Very simple. बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है. आपको मालूम है स्पीड 1 is to speed 2. रेशियो मालूम है आपको. 100 and 150, 50 के टेबल पे कट जाएगा. 2 and 3. दैट मीन स्पीड का रेशियो है 2:3. दैट मीन्स टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स, बिकॉज स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो इनवर्स है. दैट मीन्स द आंसर आएगा 3:2. दैट इज माई आंसर. दिस इज ऑल्सो क्लियर. दैट इज वाई आई वाज सेइंग अगेन एंड अगेन कि हमें जो शॉर्टकट्स हैं वो पता होने चाहिए. व्हेन आई से शॉर्टकट, जो मैंने आपको रिलेशन डायरेक्ट और इनवर्स वाला बताया थोड़ी देर पहले, द सेम आई एम टॉकिंग अबाउट. इज दिस क्लियर? एग्जांपल नंबर 6. ग्रेट.
Let's go to example number 7. Now average speed का concept है छोटा सा एक. What is average speed? The basic formula they have given to you, that average speed is total distance traveled by time taken. That is your average speed. बट अगर डिस्टेंस ना दिया हो तो क्या करोगे, उसका भी तरीका बताता हूं एक. उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 7. इफ मनोज कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 3 स्ट्रेचेस 100 किलोमीटर ईच. नाउ 100 किलोमीटर ईच मतलब मेरा डिस्टेंस तीनों बार सेम होने वाला है. स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर 100 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर अगेन 100 किलोमीटर. नाउ एक फॉर्मूला तो इन्होंने आपको ऊपर दे दिया, इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी है. एवरेज का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दैट यू गाइस नो, दैट एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये तो आपने पढ़ लिया. टोटल डी डिवाइड बाय टोटल टाइम. बट देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो. अगर डिस्टेंस सेम होता है, सेम किस चीज का, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला है कि आपको ए से बी जाना और बी से वापस ए आना है, तो आपका डिस्टेंस सेम है. एक केस तो ये हो गया. एक केस जो अभी क्वेश्चन में आपको लिख के दिया इन्होंने, जिसमें आप एक पॉइंट से 3 पॉइंट पे जा रहे हो और हर बार डिस्टेंस उसने आपको बताया कि यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है, यहां पर भी 100 है. तो ये सारे डिस्टेंस सेम है आपके. नो शॉर्टकट क्या है, हमने एवरेज स्पीड पढ़ा, दैट इज अर्थमेटिक मीन. एक होता है हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन में क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्यों यूज हो रहा है ये भी समझ लो. हार्मोनिक मीन इसलिए यूज हो रहा है बिकॉज स्पीड एक डायरेक्ट यूनिट नहीं है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है, डिराइव्ड यूनिट है डिस्टेंस और टाइम से. तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज एन, डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b. जितनी भी टर्म्स है आपकी वो चलती चली जाती है आगे. तो जब दो स्पीड्स आपको दी हैं तो बड़ा सिंपल आप यूज कर सकते हो, दैट इज 2/1/a प्लस 1/b. ए और बी क्या है, स्पीड्स है यहां पर. इफ यू टेक एलसीएम, ए बी आ जाएगा, यहां पर बी प्लस ए आ जाएगा. तो जो शॉर्टकट डिराइव होगा केस 1 में, ए बी ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2ab डिवाइड बाय ए प्लस बी. दिस इज द शॉर्टकट यू गेट. तो केस 1 का शॉर्टकट बड़ा सिंपल है, दैट इज 2 इंटू स्पीड 1 डिवाइड बाय इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2. दिस इज द शॉर्टकट यू कैन यूज फॉर केस 1. केस 2 में क्या कर सकते हो, इसी चीज को आप लेके चल सकते हो, 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c. नौ जब आपका एलसीएम बनेगा ए बी सी, तो अब आपका केस 2 में आंसर बन जाएगा 3abc डिवाइड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. दिस इज इन केस 2 यू गोना वर्क. आप ऐसे जितने मर्जी केसेस के फॉर्मूलाज बना सकते हो, जब दो डिस्टेंस इक्वल है या 3 इक्वल है, 4 इक्वल है, आप जितने मर्जी डिराइव कर सकते हो. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट. नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में गिवन है 3 अलग अलग स्पीड्स हैं, तो इन्होंने ये फॉर्मूला यूज किया यहां पे. अब क्यों यूज किया, आई थिंक पिछले में सारा क्लियर है, जो पिछले शीट पे आपको समझाया. तो ये फॉर्मूला यूज किया है, मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 30 इंटू 60 इंटू 80 डिवाइड बाय 30 into 60 into 30 into 80 into 60 into 80. I get the answer as 48 after all the calculation.
Please let me know if this is also clear. Great, very nice. Let's go to the next question. Example number 8. It says a train covers half the distance of a journey at 150 km per hour and remaining half मतलब 50-50 हो गया at 180 km per hour. So what is the average speed? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा मेरा 2ab by a plus b वाला. So I can use the formula that is 2ab divided by a plus b. That means it is 2 into 150 into 180 divide by 150 plus 180 330. 0 get cancelled. 3 into 11, 3 into 6. I'll get the answer as 2 into 6 12, 12 into 0 0, 12 into 0 0, 12 into 5 60 0, 12 into 1 12 and 6 18. I'll get 1800 by 11, which is approximately, they said, 164. 11 into 1 11, 70, that is 66, and then 40, that is 163.63. I'll get the approximately answer as 164. The same answer I have here. I believe it is also clear. No need to take a poll also for this, I believe. Anybody has a doubt, they may raise the hand. Let's look at the next question. Question number 9. Anand drove at an average speed of 30 km per hour. So this is the average they have given to you. For some time, and then at an average speed of 60 for the rest of the journey. If you drove without stoppage and his average speed for the entire journey was 50, then what part of total time did he drive at the speed of 30 km per hour? ना उसने बताया एवरेज स्पीड जो है 50 है. How are we going to do it? Let's do it there on the next other slide. This is example number 9. आनंद ने ड्राइव किया 30 का एवरेज स्पीड है उसका फॉर सम टाइम, फिर 60 का, एंड द एवरेज वाज 50. अब अगर आप लोगों को मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक याद है तो मैं वही फॉर्मूला उसमें इसमें यूज कर सकता हूं. दैट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड, एंड दे मेक इट 50 किलोमीटर का एवरेज. नाउ डिफरेंस, this is 2 and this difference is 1. मिक्सचर लिगेशन हमने टॉपिक किया था लास्ट टाइम. आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू शुड नो इट जिन्होंने वो क्लास 10 की है हमारी. तो आई गेट द आंसर स्ट्रेट अवे. मेरा आंसर आ गया बड़ा सिंपल सिंपल. उसने मुझे बोला कि 30 किलोमीटर की आर की जो स्पीड है वो कितना टाइम ड्यूरेशन किया. दैट इज 1:2 मेरा टोटल ड्यूरेशन है. तो 1 पार्ट किया 30 की स्पीड से, 2 पार्ट किया 60 की स्पीड से, मतलब 30 की स्पीड से आई हैव ट्रेवल्ड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस. दैट इज माई आंसर. मिक्सचर की क्लास यूट्यूब पे भी है मेरे पास. इफ एनीबडी वुड लाइक टू टेक द बैकअप दे कैन टेक इट. क्योंकि दो स्पीड्स को मिक्स किया जा रहा है और तीसरी स्पीड बनाई जा रही है और दोनों का मुझे अलग अलग मालूम है.
तो मिक्सचर एलिगेशन जिसने किया होगा उसको तो क्लियर होगा साफ. व्हाट वी डू, वी टेक द लोअर वैल्यू और द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं हायर वैल्यू, बीच में लिखते हैं एवरेज. देन वी टेक अ क्रॉस, 30 और 50 का डिफरेंस 2, 60 और 50 का डिफरेंस 1, एंड दिस डिफरेंस इज द रेशियो ऑफ बोथ दी स्पीड्स, कि कितने रेशियो में यहां जाना है मुझे. इज दिस क्लियर? वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस. इज a shortcut which we have used. मैंने कहा था मिक्सचर के टॉपिक के जो शॉर्टकट्स हैं वो कई कई क्वेश्चंस में आपको काम आने वाले हैं, कई टॉपिक्स में काम आने वाले हैं, इवन प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आने वाला है. Look at the next example, example number 10. This is the last example of the day. A train covers a distance of 300 km with a speed of 100 km per hour, and another distance of 200 km with a speed of 150 km per hour. If the train takes the same time, how it can be same time? यहां पर लगेंगे उसको 3 hours और दूसरी जर्नी पे लगेंगे उसको 200/50, मतलब 4/3 hours. आई थिंक देयर सम प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. ये नहीं आएगा यहाँ पे. दे शुड आस्क स्ट्रेट अवे द एवरेज स्पीड, या फिर दे शुड नॉट गिव अस द स्पीड, या कुछ ये डिस्टेंस नहीं देना चाहिए. कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, गारंटीड है. बिकॉज टाइम कांस्टेंट है नहीं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सेड टू अस कि इतना पहले जाते हुए 3 आवर लगने हैं, बाकी में 4/3 आवर लगने हैं. इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड. आई थिंक देयर सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन. सो फाइंड द एवरेज स्पीड. तो 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आवर एंड 200 किलोमीटर, टोटल मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 500, एंड टोटल जो टाइम हो गया 3 + 4/3, दैट इज 13/3. The answer going to be 1500/13. That is the average speed I have. That should be the answer. इन्होंने जो क्वेश्चन किया है 125 km/h, दैट आई बिलीव दे हैव टेकन ये क्वेश्चन में इन्होंने इस किलोमीटर्स को ये नहीं गिवन होगा. यहां सम डिस्टेंस आना चाहिए, क्योंकि सम डिस्टेंस आते ही मेरा एवरेज 125 आ जाएगा. इज दिस क्लियर टिल हियर? बिकॉज डिस्टेंस भी हम सेम नहीं रख सकते, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस भी अगर सेम रख लिया तो मेरा शॉर्टकट यूज होगा, दैट इज 2xy/x + 5, और उससे 125 नहीं आने वाला. इन्होंने एवरेज स्पीड का सिंपल फॉर्मूला यूज किया हुआ है. So that means there's a problem in the question. इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, but still in any ways we can find out the answers. Is this clear now? I'm sending the both the PDFs in the chat box so you guys can download it for your references and you can keep that for the records. आज इतना ही है, कल करेंगे इसको, नेक्स्ट खत्म करेंगे इसको हम लोग. One of the PDF is almost there. It is in the chat. Second PDF also I'm sending. Anybody has any doubts, they can please ask me.